Okay, students, let us find the solution of subparts, that is the fourth and fifth of question number first, taken from our exercise number 5.1, that is our fifth chapter of mathematics 2, named as application of definite integral. Here we have to integrate, we have to find the area enclosed by curves. First curve is x into y is equal to 2 and x is equal to 1 and x is equal to 4. There are three curves. First is x into y is equal to 2. Second one is x is equal to 1 and x is equal to 4. Let us find the area enclosed by this curve. We can find the area using the diagram or using our direct formula, that is area. Solution of first area is given as x is equal to 1, x is equal to 1 to x is equal to 4, that is limits of x. And we know that when we write the limits of x we have to write dx. अगर हम x का लिमिट लेते हैं तो हमें इस केस में x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होता है. वी हैव टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x व्हेन वी टेकिंग द लिमिट्स ऑफ x, मीन्स we move along a positive x-axis, that is from x is equal to 1 to x is equal to 4, which are given, and we have to write y here. Okay, so integral from x is equal to 1 to x is equal to 4 y dx, and this one is equal to 1 to 4 y is equal to, y should be in the form of x. So from the curve, from the equation of curve, which is xy is equal to 2, so y is equal to 2 upon x, y is equal to 2 upon x. Here y is in the form of x, that is 2 upon x, y is the function of x, so write 2 by y is equal to 2 by x और यहाँ पे dx. Okay, so you can write 2 outside of the integral, and next step is integral from 1 to 4 of 1 upon x dx. This one is twice of integral of 1 upon x with respect to x is log of x, log of mod of x taken from 1 to 4. This one is equal to twice of log of 4 minus log of 1, that is lower limit 1. This one is equal to twice of log of m minus log of n. Log of m is equal to 4, n is equal to 1, that is m by n, that is m by n, m divided by n. So this is equal to twice of log of 4. Okay, तो ये रहा है आपका आंसर, that is area enclosed by curve xy is equal to 2 taken from x is equal to 1 to x is equal to 4. And the second answer, the second question is given as y square is equal to 16x from x is equal to 0 to x is equal to 4. Okay, students, first नोट कीजिए, उसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ओके, प्लीज मेक अ नोट. Okay, so next question is y square is equal to 16x, that is parabola, and symmetric with x-axis. So if we draw the parabola which is along x-axis, means symmetric with positive x-axis, vertex at origin, that is 0 and 0, and the range of x is equal to 0 to x is equal to 4. Let 1, 2, 3 and 4. This one is 4. So this area is we have to find. Okay, 0 to 4 और 16x, यहाँ से यहाँ तक ये हमको ये वाला एरिया चाहिए. ओके, क्लियर. सो ए मान लीजिए ए आपका हो गया, लेटेस्ट आइटम नहीं, ए बी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. सो ए इज इक्वल टू 4, यहाँ 4 and 0 passing through the lattice rectum, that is L and L dash. L and L dash are the end points of the lattice rectum. So area
A1. So if we find the area A1 and after multiplying by 2, we get the total area enclosed by the curve, that is x equal to 0 to x is equal to 4. Okay. So let that is A1 is from 0 to 4. 0 to 4, and since we are taking the limits of x, we have to write dx and here y. This one is equal to 0 to 4, here y is equal to under root of 16x dx, and this one is equal to 4 integral from 0 to 4 x to the power 1 by 2 dx. This one is equal to 4 x to the power 3 by 2 upon 3 by 2 from 0 to 4. Okay, so 4 to the 8 by 3, and when we put upper limit at the place of x, we get 2 square to the power 3 by 2. 4 means 2 square. 2 and 2 get cancelled. We have 2 to the 4 to the 8. That is 8 at the 64 upon 3. Okay. So and we can find A2. It similarly जो A1 होगा वही A2 होगा. Okay. Area enclosed by upper above the x-axis and below the x-axis between x equal to 0 to 4 and curve are same. So it is A2 is equal to 64 upon 3. So total A is equal to A1 plus A2, that is 64 upon 3 plus 64 upon 3, that is 128 upon 3 square unit. Okay, तो इस तरीके से आप एरिया बिटवीन द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x एंड x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 4 फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है, तो नोट कीजिए. नेक्स्ट सम वी विल ट्राई. ओके, next question is we have to find the area enclosed between the circle, that is x square plus y square is equal to 1, and we know that x square plus y square is equal to 1 is the standard unit circle. What is standard unit circle? A circle whose center lie on the origin and having the radius of 1 unit. Okay, आया समझ में? The circle whose center lie on the origin and having radius of 1 unit. ऐसा सर्कल जिसका सेंटर कहाँ पे हो, lie on the origin and radius of 1 unit is known as the standard unit circle. And the second one is our straight line, that is linear equation of line, that is x plus y is equal to 1, line in x and y. Okay, first of all let us draw the diagram of these two curves. First of all, since अभी मैंने बताया, we have discussed just x square plus y square is equal to 1 is the standard unit circle. मतलब ऐसा, it is the standard unit circle, means the circle whose center lie on the origin. यहाँ पे lie on the origin, कहाँ पे है? origin पे है, ये origin पे है उसका center at 0 and 0 and radius of 1 unit. radius क्या है? 1 unit का है, means यहाँ पे क्या आना चाहिए? 1 and 0. This is the radius of 1 unit. radius of 1 unit means 0 and 1. ये आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस है और नेगेटिव एक्स एक्सिस, सॉरी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस. ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको, ये आपका स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल है. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1. सेकेंड वन इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1. We have to find the coordinates on x axis and y axis, means the point of intersection, or you can say the common point of given line with the x axis and y axis, means point of intersection, or you can say the common point of the given line with the x axis and y axis. For this you write, for finding the
point on x-axis, you always put y is equal to 0. एक्स एक्सिस पे पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, वी ऑलवेज पुट y इज इक्वल टू 0. क्यों? सिंस वी नो दैट ईच एंड एवरी पॉइंट लाई ऑन द एक्स एक्सिस हैज इट्स y कोऑर्डिनेट 0. ओके, इस तरीके से हम यहाँ पे पुट y इक्वल टू 0 रखते हैं. तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 1, वी गेट x इज इक्वल टू 1. सो लेट पॉइंट कितना हुआ, 1 और 0. और 1 0 कहाँ पे है, यहाँ पे है. लेट दिस वन इज a. ओके, सेकेंड पॉइंट, फॉर फाइंडिंग द पॉइंट ऑन द y एक्सिस वी हैव टू पुट x इज इक्वल टू 0. तो आपको यहाँ पे क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू 0. तो 0 प्लस y इज इक्वल टू 1, we get y is equal to 1. So in this way the point is 0 and 1, जो कि देखो यहाँ पे है 0 और 1. दिस इज b. अब a एंड b से अपना ये जो लाइन है, आवर लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, स्ट्रेट लाइन, ये हमेशा इन दोनों पॉइंट से पास होके पासिंग थ्रू पॉइंट्स a एंड b. ऐसा ये रहा आपका x प्लस वाई, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 1. ओके, अब आपने इसको ग्राफ ड्रॉ कर लिया. ओके, पहले क्या किया, इसको आपने पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में. फॉर फाइंडिंग द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस वी हैव टू पुट y इज इक्वल टू 0. क्यों? क्योंकि हर एक पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे होता है उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है. अब y एक्सिस पे पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम हमेशा क्या पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं. क्यों पुट करते हैं? सिंस ईच एंड एवरी पॉइंट लाई ऑन द y एक्सिस हैज़ इट्स x कोऑर्डिनेट 0. इस तरीके से हम वहाँ पे 0 पुट करते हैं, x इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो 1 0 मिला और 0 1 मिला. हमने नाम क्या दिया, a और b. हमें क्या चाहिए, एरिया बिटवीन द कर्व्स. फर्स्ट कर्व क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1, दैट इज ए वाला सर्कल. सेकेंड वन इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, दैट इज आवर स्ट्रेट लाइन. तो मेरे ख्याल से ये वाला एरिया हमें चाहिए. द शेडेड रीजन, ये है आपका एरिया ए. मालूम चल गया. तो हमें करना क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द एरिया covered by the curve and x axis and y axis. मीन्स x इज इक्वल टू 0 से ले करके x इज इक्वल टू 1 तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट इज लिमिट्स ऑफ x इज इक्वल टू 0 लोअर लिमिट, x इज इक्वल टू 1 इज द अपर लिमिट, एंड द कर्व कैसा, सर्कुलर कर्व जो सर्कल का है उसे आप फाइंड आउट कीजिए. मतलब लेट दिस वन इज a, ये वाला एरिया पहले फाइंड करना है आपको. मतलब इस कर्व से एक कर्व और x इज इक्वल टू 0, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये वाला कर्व का एरिया पहले आप फाइंड आउट कीजिए. दैट इज a1. आफ्टर दैट फाइंड ए वाला एरिया, मतलब एरिया फॉर्म बाय द स्ट्रेट लाइन एंड taking from x is equal to 0 to x is equal to 1, that this one is a2. Okay, so area between these two curve, that is a is equal to a1 minus a2. Okay, a is the area of the region which is made between the given two curves. First one is x square plus y square is equal to 1, and the second one is x plus y is equal to 1. इनके बीच का एरिया है. तो कैपिटल A इज इक्वल टू a1 माइनस a2. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड a1. a1 कैसे फाइंड आउट करना है उसको देखते हैं. एरिया a1 इज फॉर्म बिटवीन कर्व्स, दैट इज a1 is made from x is equal to 0
x is equal to 0 to x is equal to 1. X is equal to 0 to x is equal to 1, and we have to write dx. Since we are moving along positive x-axis, so we have to integrate with respect to x, that is dx, and here we have to write y. This one is equal to x is equal to 0 to x is equal to 1, and y should be in the form of x. So y is calculated from the equation of the curve, that is a circle. यहाँ से आपको यहाँ से y कैलकुलेट करना है, that is x square plus y square is equal to 1. So y square is equal to 1 minus x square. Y is equal to under root of 1 minus x square. So y is equal to under root of 1 minus x square. यहाँ पे आया dx. तो we get y is the function of x, that is under root of 1 minus x square. And we know that this one is a integral formula, that is x by 2 under root of 1 minus x square plus a square by 2. A means 1 square, that is 1 square by 2 into sin inverse of x by a. A means 1. Okay, lower limit is 0, upper limit is 1. ये कहाँ से आया? इंटीग्रल फ्रॉम अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फार्मूला, दैट इज लिख देता हूँ ऐसा, इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 2 अंडर रूट ऑफ a square minus x square plus a square by 2 sin inverse of x upon a plus c, a वाला. Okay, so here a is equal to 1, x by 2 under root of a square minus x square. A is 1 plus a square by 2. A means 1 square by 2 sin inverse of x by a. A means 1, lower limit is 0, upper limit is 1. So this one is equal to, when we put x is equal to 1 means upper limit, that is यहाँ पे, when we put x is equal to 1 we get 0, and here 1 by 2 sin inverse of x is equal to 1, that is 1 by 1 minus lower limit, that is x is equal to 0, पूरा सबको 0 कर देगा, और यहाँ पे sin inverse of 0 ही होता है, तो मतलब 0. This is equal to 1 by 2, sin inverse of 1 is pi by 2, we get pi by 4. So this one is pi by 4. ये रहा है आपका A1. तो इस तरीके से A1, तो नेक्स्ट है A2. A2 is the area formed by the second curve, that is x plus y is equal to 1, which is the straight line, okay, intersecting both axes, that is x axis and y axis at the point A and B. A is 1 0, B are 0 and 1. Okay, so A2 is x is equal to 0 to 1 of dx. यहाँ पे y लिखना होगा. So this one is equal to 0 to 1. Y should be in the form of x, and here x plus y is equal to 1, so y is equal to 1 minus x dx. Y is equal to 1 minus x dx. This one is equal to integral of 1 is x minus integral of x with respect to x is x square by 2 from 0 to 1, and upper limit 1 minus 2 minus 0 plus 0, so 2 1s are 2, here I have 1 by 2, and we have to find area between these two curves, that is area is equal to A is equal to A1 minus A2. A1 minus A2, A1 is pi by 4, A2 is 1 by 2. Okay, so when we take 1 by 2 as a common, we get pi by 2 minus 1. ये रहा square units. Okay, so area between the two curves whose equations are x square plus y square is equal to 1, which is the standard unit circle, and the second is our line x plus y is equal to 1. The area is
1 by 2 into pi by 2 minus 1 square unit. Okay, students, any doubt, any problem? Please make a note.